Rakesh Jhunjhunwala's firm had invested in our company. Top sales and marketing campuses across India. And Right. we think we are one of the best. Hi guys, welcome back to the channel. Today I am in SIBM Pune और मेरे साथ एक गर्व. By the way, he is from Bombay, I am from Bombay. But गर्व की ना story काफी interesting है. He has done his graduation in statistics and उसके बाद entrepreneurship भी किया. And then Snap लिखा and he got into SIBM Pune. My first question, भाई stats करने के बाद MBA कैसे सोचा? So while I was studying stats, my interest primarily rose in marketing analytics. So Okay. उसमें और deep dive करना चाहता था. हाँ. उसी के around I did my own startup as well. And Okay. while doing a startup, I realized that I'm too young to do one, and I want to understand how things happen at scale. Okay. तो वहाँ पे सोचा कि the best way I can do it is actually go for an MBA. To learn how companies are operating at scale, Okay. come back with some exposure, experience, and then maybe become an entrepreneur much later, or just ride the corporate way. Right. So जब entrepreneurship चल रही थी आपकी, ऐसा कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से तुझे लगा होगा कि okay, because this thing has happened, I think I should be looking out for a proper MBA degree जहाँ पे मुझे ये knowledge gain करने को मिलेगा. So any experience you want to share with us? Correct. So mainly it was due to my interactions with investors or VCs, right? So Oh, you gone to that level? Yes, sir. Wow. So Mr. Rakesh Jhunjhunwala's firm had invested in my company. Wow, तो that's nice. at that point, when I realized कि how they actually evaluate markets. हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे ये इंडस्ट्री बूम हो रही है. फॉर एग्जांपल एवरीवनस टॉकिंग अबाउट क्विक कॉमर्स राइट नाउ, बट ओवरऑल इट्स जस्ट 5% ऑफ द ओवरऑल मार्केट. Makes sense. तो Yes. नंबर्स को एक्यूरेटली समझना इज अ की. Exactly. एंड मार्केटिंग आल्सो वन थिंग आई लर्नड इन एमबीए इज सो मच मोर अबाउट नंबर्स देन इट अबाउट जस्ट आइडियाज हैपनिंग. So hold it here. This is a learning for all the MBA aspirants कि भाई marketing में भी बहुत ज़्यादा numbers होते हैं. Like being a finance guy, I can tell you that finance में numbers होते हैं, but marketing also numbers driven, and it is not just about बहुत सारे लोगों को लगता है marketing मतलब गैस होता है. ऐसा नहीं होता भाई. वहाँ पे भी sensible चीज़ें बात करनी पड़ती है. वहाँ पर भी नहीं, वहाँ पे भी सेंसिटिव बात नहीं होती है. Right. Continue please. So to understand that and to fine tune my skills, that's when I decided कि हाँ एक MBA is something I should invest in, especially Right. as a 23-year-old. Right. So that's when I decided to. Yeah, and for the fact marketing was your, kind of the main target. Correct. I think that is the reason SIBM Pune आपने choose करा होगा. But Correct. still you want to understand जब आपने अपना research करा था, why SIBM Pune? So a simple look at the placement reports as well of all the colleges. SIBM stands out. It has almost all the FMCG companies. और वो भी Yeah. मैंने सोचा कि अगर सेल्स एंड मार्केटिंग सीखना है हाँ. तो द बेस्ट वे इज टू ग्राइंड इट आउट इन एन एफएमसीजी कंपनी. Yeah, राइट, वो डीप रूरल जाओ, आप देखो कैसे होता है, एंड देन यू बिल्ड इट अप ऑल. तो वहाँ पे SIBM generally stood out as one of the top sales and marketing campuses across India. Absolutely, absolutely. Now let's talk about you being a non-engineer, right? I would love to understand because I have interviewed couple of students here, and non-engineers है. ऐसा नहीं कि only engineer dominated है. Non-engineers के numbers अच्छे हैं, काफी अच्छी diversity है. So उस diversity में is it difficult for somebody who's a non-engineer to cope with the culture and the curriculum? So not exactly, Okay. because अगर एक इंजीनियर भी आ रहा है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास बैठता है वो पहले हफ्ते, हाँ. they are also intimidated by it, right? So there's a lot of learning for almost everybody. Maybe a person coming in from a non-engineering background faces certain difficulty in cracking the quantitative aspect of the subjects. But वो भी because the process of entering here through SNAP or through entrance exams is so rigorous, वो clear हो ही जाता है. So kind of and faculty is very helpful. वो blend in कर लेती है अच्छे से पूरा. Right. So it's a very supportive environment, and plus we have a lot of workshops by our seniors themselves. Okay. Like I'm in second year, so we conduct a lot of workshops. So the Okay. students get familiar as to what is expected in the exam. ठीक है. Now इसको थोड़ा fast forward करते हैं because ये अभी बस मुझे मेरे दिमाग में आया कि now for the fact he said that कि यहाँ पे crowd अच्छा है वगैरह वगैरह वगैरह, right? But तुम्हारी प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा strong है. Stats करा है, फिर entrepreneurship करा है. Entrepreneurship बहुत सारे लोग करते हैं. एक कंपनी रजिस्टर करना कोई बड़ी बात नहीं है. But you took it to the good level. Investors लाए, VCs लाए, right? मेरे ख्याल से नीति आयोग के साथ भी registration हुआ, something like that. तो जब आप इतना कुछ फोड़ते हो लाइफ में और जब आप ऐसे पुणे में आते हो, जो ग्रुप है यहाँ का आपका, जो पीयर ग्रुप, उनको देखिए, were you happy? Do you believe they are at that level? Definitely, sir. So not a lot of our batchmates also know, but there's the feature voice to voice command feature in Microsoft Word. That's actually built by a batchmate of mine. He's ex Microsoft. Oh, that's nice. It's insane how the crowd out here has cracked a lot of stuff before coming here, right? तो उनसे सीखने में, उनके साथ सिर्फ इंटरेक्शन करने में, in the first month I remember telling my mom कि मम्मी मैं सीखने में ना, इधर आके पता चला मैं कुछ नहीं हूँ, like वैसा वाला फीलिंग आया था. Nice.
So definitely I think काफी But learning. you know what, एक अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडियाज टॉप 10 लेट्स से इंडियाज टॉप 7 के साथ ब्लैक कीज वगैरह के साथ, तो बहुत सारे बच्चों में नहीं हो जाता है, राइट? बट एक पीयर ग्रुप बहुत मैटर करता है एमबीए में. Correct. डू यू बिलीव कि यहाँ पे उस लेवल का पीयर ग्रुप आपको मिलता है, लाइक इज इट दैट यू नो सॉलिड यहाँ पे? 100%. I Okay. think हमारा SIBM का केस competition में भी Yeah. देखो, so it's almost at par or in fact better than most of them. So we are actually competing out there with the best, and Right. we think we are the one of the best. राइट. एंड एक्चुअली ना जो प्लेसमेंट्स होती है ना, प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर पीयर ग्रुप. बेटर द पीयर ग्रुप, better companies on the campus and better placements and profiles, no doubt about that, and that's how the college will grow eventually. Now you made a mention about the FMCG. Finally आप second year में हो, so don't mind me asking you about your SIPs. I really want to know, like, did you get a chance to intern yourself at any of the big brand from FMCG, because that's the reason you joined SIP. Luckily sir, तो मेरा ड्रीम भी था कि FMCG के लिए ही आऊँ. And Okay. I got into an FMCG, a General Mills, which has the brands Betty Crocker, Pillsbury, and learned a lot. Okay, how big is this brand when it comes to FMCG domain? So it's about a 1200 crore brand in India. Pretty big. right now. And it has one of the best distributions down south. Okay. North में तो नहीं. And another thing I learned in FMCG itself, North India, South India, India में अलग countries है. हाँ, So ये बात सही that's है. another interesting ये insight बात I सही है. learned during my internship. True that. तो वो भी बहुत सीखने मिला. So And जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे, आपका जो पीयर ग्रुप था वहाँ पे वो कौन से कॉलेजेस से था? so they were from IIM Indore, IIM Mumbai, NMIMS Mumbai. तो ये 3 कॉलेजेस से भी इंटर्न्स थे and उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला वहाँ पे कैसे होता है. So finally, you know, you made it to the place जहाँ पे you have India's top colleges के बच्चे. How was the experience overall, learning wise? और लॉट से मतलब मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा था, इधर आके पता चला कुछ नहीं है, बहुत कुछ है सीखने को. सो यू लिटरली गेट हम्बल्ड इन एन MBA कॉलेज इज वन थिंग आई से. Okay, fantastic. So we talked about your SIP, right? We talked about the peer group, right? Now I want to understand, if we deep dive into the daily tasks, जो हमने 8-10 घंटा करा, what was that work and how, you know, great it was or cool it was? So my project was about developing a new category or recommending a new category for Pillsbury India to enter into. So it could be anything completely. तो वहाँ पे पूरा FMCG स्कोप को एनालाइज करना पड़ा मुझे, लाइक ईच एंड एवरी सिंगल पैकेज फूड आइटम, उसका कैटेगरी साइज क्या है, उसका कैगर क्या है, कितने क्या ग्रोथ रेट है 2028 में, कितना बड़ा हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग पिल्सबरीज डिस्ट्रीब्यूशन फिटमेंट. अगर रीजनल है, जैसे आई मेंशन कि नॉर्थ में वो मार्केट नहीं होगा, साउथ में ज़्यादा मार्केट होगा, देन पिल्सबरी कैन एंटर. सो उन सब एस्पेक्ट्स को कवर करके आई टू रिकमेंड देम 3 to 4 कैटेगरीज विच मे बी आप मार्केट में देख पाओगे. तो यस. Okay, and how, whatever work that you've done, right, in the marketing domain, like where do you put it, at entry level, medium level, or a top level? So 100% at a very strategic level of top Wow. management, because I was interacting with the head of marketing and head of retail. तो वहीं पे मेरा interactions थे पूरे. So I think that exposure that with to you know even interact with someone on a daily basis, with someone who's worked 16-17 years in FMCG, वो काफ़ी helpful रहा मुझे. Okay, cool है. Now you know, एक दूसरा भी एंगल है जहाँ पे मैं गर्व के बारे में बताना चाहूँगा. गर्व एक्चुअली जंप फ्रॉम 77 परसेंटाइल से लेके 99th परसेंटाइल. वो एक अलग सी वीडियो आएगी जहाँ पे एक्सप्लेन करेगा एस्पायरेंट्स को हेल्प करने के लिए. बट आई वांटेड टू गिव सम क्विक टिप्स बिकॉज नाउ स्नैप इज राउंड द कॉर्नर. Is it possible to crack Snap in the next couple of 40-50 odd days? 100%. I think just keep it simple, stick to the basics, practice करो, mock exams दो, and I think you'll be good to go. So just keep it simple, don't complicate stuff, but I'll just say keep it simple. Alright, cool. Garv, thank you so very much for giving some time. And guys, it was a fabulous interaction with him. I am going to be very sure कि ये बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगेगा. So do hit that like button and share this video with your friends. Thank you so much.